है अभी। हेलो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हो? मैं हूं सतीश कुमार, फैकल्टी ऑफ मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन कर दीजिए। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू ऑल हियर। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन कर दीजिए सो दैट आई कैन स्टार्ट द सेशन। Yes, all okay, right? So how many of you are double E here? How many of you are electrical here? How many of you are electrical here? एक बार मुझे मैसेज के रूप में आप दिखा सकते हैं कितने लोग इलेक्ट्रिकल के लोग हैं इधर। ये हमारा पहला लेक्चर है मेजरमेंट्स के सीरीज पर, वाई ट्यूब पर। इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट्स कितने हैं एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का बच्चे भी कितने हैं? एक बार मुझे हाथ दिखाइए इंस्ट्रूमेंटेशन का लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सेशन डबल ई आई एन के लिए है। आप सब लोग कैसे हो? आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? मुझे एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए। जितने लोग इधर डबल ई इंस्ट्रूमेंटेशन लोग हैं, उसका प्रिपरेशन ऑफ द गेट इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? कब तक आ गया? आप जितने लोग मेजरमेंट स्टार्ट किया है, ओके, उसके बारे में भी आप दे सकते हैं मुझे मैसेज के रूप में। ओके, चलो दोस्तों। या इंग्लिश वाला चैनल क्रैश कोर्स कंप्लीटेड। कल yesterday ओनली वी हैव कंप्लीटेड द क्रैश कोर्स। ओके, तो आज से हम यहाँ लाइव क्लास देख रहे हैं। लाइव क्लास में हम थोड़ा सा अच्छा इंटरेक्शन करेंगे, बच्चों से भी आपको लाइव इंटरेक्शन हो सकता है। मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूं ये 5 और 6 सेशंस में मैक्सिमम कंटेंट आपको देने के लिए। ओके, चलो ठीक चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो दोस्तों, एक बार मैं सिलेबस आपको पता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स का सिलेबस। ओके, मेजरमेंट्स इज सच ए वास्ट सब्जेक्ट, बहुत विस्तार सब्जेक्ट है। बहुत टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, खुद से पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए मैंने थोड़ा एक्सरसाइज किया आपको, थोड़ा लेस टाइम में कैसा प्रिपरेशन करना। इसके लिए एक सिलेबस का ब्लूप्रिंट होना है आपके पास। ओके, सो एक बार मैं सिलेबस का ब्लूप्रिंट देना चाहता हूं। ओके, सो आप जो कुछ सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स, तो दिस मेजरमेंट्स को आप ऐसा प्लान करना है, 2 पार्ट से आप कर सकते हैं। मेजरमेंट्स को आप 2 पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं। मेजरमेंट्स को आप 2 पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं फटाफट। वन इज द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, अदर वन इज द इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स माय डियर। ओके, तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स है। ओके, बोथ आर इंपॉर्टेंट। गेट की तरफ से 2 सेक्शंस पर हमको बहुत अच्छा क्वेश्चंस आ चुका है। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। या सेशन के बाद मैं आपको डीपीपी भी दे सकता हूं। ये सेशन का पीडीएफ भी मैं सेव करता हूं। मैं पीडीएफ एंड डीपीपी बोथ आपको पीडब्ल्यू आप में मिलेगा। ओके, आज का सेशन सपोज एरर एनालिसिस है। एरर एनालिसिस में मैं सम क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूं इधर। ये सेशन होने के बाद आपको एक्सरसाइज भी दे सकता हूं 4 और 5 मिनिमम। ओके, आई विल मेक इट एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस। ओके ना, 10 डीपीपी क्वेश्चंस आपको मिलेगा। वो जरूर आप नेक्स्ट क्लास में मुझे आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे।
अगर आप जो क्वेश्चंस आपको टफ दिखते हैं, हम अगेन फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं विच क्वेश्चंस आर वेरी टफ टू यू, विल ट्राई टू डिस्कस देम बाय टेकिंग सम एक्स्ट्रा टाइम। रोज हमारा सेशन रात 8:30 PM टू 10:30 PM तक फिक्स है। इफ सिचुएशन डिमांड्स आई कैन एक्सटेंड, प्रोवाइडेड आपका इंटरेस्ट। ओके माय डियर, चलो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, ओके मैं मिक्स करने की कोशिश करता हूं हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सब्जेक्ट टेक्निकल है। तो इधर देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा एक ब्लूप्रिंट होना है, फटाफट सिलेबस को एक ब्लूप्रिंट में होना है, क्योंकि टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर। टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करना है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस एरर एनालिसिस, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एक कॉमन टॉपिक है इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों के लिए भी। क्वेश्चन जहां से भी आ सकता है, क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी टॉपिक, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड एरर, क्वेश्चन बी आस्क्ड फ्रॉम एक इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड एरर ऑल्सो, लाइक फ्लो रेट एरर, टेम्परेचर एरर, ऐसा भी आपको पूछने की चांसेस है। सेकंड थिंग, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स माय डियर। तो अंडर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलेगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपको मिलेगा बहुत सारा लिस्ट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। उसमें क्या क्या मिलेगा आपको देखो एक बार। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपको मिलेगा फर्स्ट पीएमएमसी मिलेगा, ओके। आप सिलेबस को देखते हो, सिलेबस में क्या होगा आपको, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज करंट पावर होगा, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर। सो दिस ऑल इंस्ट्रूमेंट्स विल कम अंडर दोस कैटेगरी। पीएमएमसी एक है, नेक्स्ट सेकंड है मूविंग आयरन, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। थर्ड इंस्ट्रूमेंट है डायनामोमीटर, डायनामोमीटर, ओके। नेक्स्ट watt meter, that is a modification for the dynamometer। watt meter से हम क्या मेजर करते हैं, पावर मेजरमेंट करते हैं, पावर मेजरमेंट। तो पावर मेजरमेंट 3 फेज पावर भी है, ओके, वेरी गुड, MCMI 3 फेज पावर भी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर गोइंग टू गेट 2 watt meter methods, okay, so 2 watt meter method for measurement of power। next one, energy meter, next one, energy meter। and continuation in measuring instruments, after that we are going to have some special instruments like instrument transformers, instrument transformers। under this instrument transformers we are going to have CT, current transformer, and potential transformer, and some miscellaneous instruments like potentiometer, potentiometers, and electrostatic voltmeter, and thermal instruments, thermal instrument। ये बहुत सारी लिस्ट है। This is a complete list of measuring instruments। Please all of you maintain the notes, very good, please all of you maintain the notes। measurement of measuring instruments में main instruments PMMC, moving iron, dynamometer, 2 watt meter power measurement, energy meter, and उसके बाद instrument transformers, potentiometer, electrostatic voltmeter, thermal instruments, okay, thermal instrument, separate instruments। thermal instruments means hot wire meter, okay, thermocouple based instruments, these all will come under thermal instrument। ये पूरा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का चैप्टर है। इसके बाद आपको है मेजरमेंट्स ऑफ ब्रिजेस। ब्रिजेस में क्या आएगा, ब्रिजेस आपको 2 टाइप्स ऑफ ब्रिजेस है। ब्रिजेस आर सुटेबल फॉर रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी measurements, okay na, is it clear? And these particular bridges are classified into 2 categories, DC bridge and AC bridge। ऐसा ब्लूप्रिंट होना जरूरी है सिलेबस के लिए। डीसी ब्रिज में आपको मिलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
Wheatstone bridge and Kelvin double bridge most important है. Under the AC bridges आपको है Maxwell bridge, Maxwell inductance bridge है, Maxwell inductance capacitance bridge है, Maxwell inductance capacitance bridge है. Next, Hayes bridge, Owens bridge, Anderson bridge, DeSauty bridge, Sharing bridge, and Wiens bridge. Please, all of you, make a note of all this list. Okay, so we are going to cover the questions related to all these things. So, jitne log here, second years, third years, anybody is there here? Second years, third year students? Second year, third year students. Anybody from second year, third year? Please share. Second year, third year. Second year, third year students. Anybody? Third year, fourth year? Yeah. See why? Because second year बच्चों के लिए आपको सिलेबस का पूरा व्यू होना चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपको. सिलेबस का पूरा व्यू होना चाहिए. Some of the students may not be have completed the subject. It depends upon the university. University to university, the syllabus formation differs. The semester syllabus differs. But whenever you are preparing, अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट का सिलेबस फॉलो करना है. आपका यूनिवर्सिटी का सिलेबस को छोड़ के आपका गेट का सिलेबस को फॉलो करना है. So the first motto, very very important point my dear students, नेग्लेक्ट मत करना. जो भी एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लिखना शुरू किया, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप प्रिपरेशन करना शुरू किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर सिलेबस. इट्स नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर गेट एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपका स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, और इफ यू आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इफ यू आर फ्रॉम तेलंगाना, if you are from Kerala, if you are from Uttar Pradesh, if you are from other states of the different location, Orissa Vidyut Nigam Limited, Uttar Pradesh Vidyut Nigam Limited, okay, Maharashtra Electricity Board, different companies, different people, whenever they are giving the notification, they will throw you a syllabus. You have to follow the syllabus, my dear. तो अगर आपने फोर्थ ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सेकंड ईयर हो, whatever your section it may be, you have to carry the blueprint of the syllabus. So this is the blueprint of the syllabus, my dear. समझ रहे हैं आपको? All of your understanding, my dear. Maybe I may be taking 5 or 10 minutes in the beginning because everybody has to have this blueprint in their mind. It's not only applicable for my subject, it is applicable for any subject of any engineering branch. All of you understood? Yeah. Once again I'm telling in brief, measurements का syllabus दो parts से classification कर सकते हैं. First part is electrical measurement. Under the electrical measurements, most important error analysis. Next, vast portion is coming under the measuring instruments. Measuring instruments is having a list of instruments: PMMC, moving iron, dynamometer, 2-watt meter, power measurement by 2-watt meter method, energy meter, and instrument transformers. Under the instrument transformers, we are having the current transformer, potential transformer. Next, potentiometers is also important. Electrostatic voltmeter. In shortcut, I have given electrostatic voltmeter and thermal instruments, my dear. And after this, one more important topic है, that is bridges. Bridges में दो classifications है, DC type bridge and AC based upon supply voltage. अगर आपने supply voltage DC दे रहे, DC bridge. So this crash course will be 5 days.
Himanshu, this crash course will be for 5 days, my dear. This crash course is for 5 days. Okay, this crash course is for 5 days. I will try to take one more session, it depends upon the situation. Okay, 8:30 to 10:30 hoga. Chalo, after the bridges, some more important thing hai, that is resistance measurement. This is also given, my dear, in the syllabus. Resistance measurement. Resistance measurement. Resistance measurement is again classified into 3 categories. One is the low resistance measurement. Next one is the medium resistance measurement. Next one is the high resistance measurement. Low, medium, high. Low, medium, high. Low resistance के लिए again different scenarios है. Kelvin double bridge will come under this. Medium resistance के लिए Wheatstone bridge will come under this. And ohm meter method will come here. And high resistance के लिए आपको मेगर है, मेगर मेगा ओम ब्रिज, मेगा ओम ब्रिज, ओके ना, मेगा ओम ब्रिज. ओके, सो दीज आर दी मेजर टॉपिक्स. यस, 2 घंटे का क्लास है, माय डियर. 2 आवर्स का क्लास है, 2 आवर्स का क्लास है. यस राहुल, सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल भी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं. ये पूरा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स होने के बाद एक बार मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में प्लान है मेरे पास. इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक्सक्लूसिव प्लान है. मैं अभी ये पर्टिकुलर लाइव सेशन में मैं आपको I cannot open it up. After the completion of this crash course of electrical measurements, definitely आपको मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में एक परफेक्ट प्लानिंग है, वो भी आप मैं एग्जीक्यूट करता हूँ. आईएन का लोग और इलेक्ट्रिकल का लोग, जितने लोग आईएन का पेपर को लिखना चाहते हो, how many of the students, if you are interested to write IN paper as option 2 also, you can write it, and 2 months preparation is enough for it. Why? Because you are having 3 more subjects extra. One is the sensors and industrial instrumentation, optical instrumentation, and process control. Okay, so all of you taken the syllabus, my dear? Chalo. Yes, chalo. Now let us go for electronic measurements. Under the electronic measurements, my dear, majorly we are having 3 topics. First most important is the cathode ray oscilloscope, and the next most important thing is the Q meter, and the next most important thing is digital voltmeter. These are the major important repeatedly asked topics. इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट छोटा सा सिलेबस है लेकिन इंपॉर्टेंट है. हर साल हमको इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स के ऊपर आइदर सीआरओ के ऊपर और डीएम के ऊपर, क्यूमीटर के ऊपर 1 और 2 क्वेश्चंस आने की चांसेस है. द वेटेज डिफर्स, वेरी सैड. लास्ट ईयर वी गॉट ओनली one question. Before last year we got 2 marks question. But whenever you are preparing, we cannot say the gate minimum weightage is, I am expecting 8 marks, 8 to 12 marks. Yes, चलो. इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैं बताता हूं, मैं अंत में बताता हूं. इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं. इफ यू वांट यू कैन राइट द इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक्स. दीज आर ऑल इलेक्ट्रिकल. अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लोगों के लिए in addition to this for IN extra topics, please note down, for IN we are having some extra topics. The extra topics are units, dimension, units and standards. This is one topic. Shielding, and grounding, ये भी एक्स्ट्रा टॉपिक है. प्लीज मेक ए नोट. जितने लोग आईएन का स्टूडेंट्स हैं, आईएन का स्टूडेंट्स, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस पॉइंट्स. यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड्स, शील्डिंग एंड ग्राउंडिंग. ओके, so please go through the syllabus once again, my dear. Take certain time, we'll start the questions. हमारा फर्स्ट टॉपिक है एरर एनालिसिस. एरर एनालिसिस के ऊपर हम आज का चर्चा स्टार्ट करेंगे.
directly in the crash course. We are going to start from the topic. Please give me your thumbs up so that we can start the question. या अभी क्लियर है वॉइस? या थम्स अप दिखाइए अभी जल्दी, हम स्टार्ट करेंगे. चलो अभी क्लियर है, वॉइस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है ना? चलो first question, try to answer this question my dear. Question number 1. क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्लियरली? क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर करने की कोशिश कीजिए. A resistance is measured. A resistance is measured by the voltmeter ammeter method employing DC excitation and a voltmeter of very high resistance connected directly across the unknown resistance. Okay, if the voltmeter and ammeter readings are subjected to maximum possible errors of 2.4% and 1% respectively, then the magnitude of maximum possible percentage in the value of resistance. What is the answer? Yes, Mayank Singh. See, if you see, this question is based upon what? There is a circuit, simple circuit like this. So this is a DC voltage applied, and this is a ammeter, and this is the resistance. So across this resistance there is a voltmeter, and here comes to your ammeter. This is a current ammeter. So what is the R? R can be taken as simply V by I. लेकिन ये voltmeter में कितना error है? This voltmeter and ammeter readings are subjected to a maximum possible errors of, this is having an error of how much? 2.4%, and this is 1% respectively. Then the magnitude of maximum possible percentage kitna hoga? So this question is related to what? Whenever you are taking the combination of quantities as a division, there is one fundamental rule, please note down. There is a fundamental rule. So in combination of division of quantities, their percentage errors can be added. Percentage errors can be added. So please make a note of this point. So he has given very clearly, this is how much? 2.4%. So the answer will be 2.4 plus 1. So the right answer is 3.4%. So the option D is the right answer. Of course, ये particular concept के ऊपर आपको number of times question आ गया.
Gajendra Singh, the current is in series to the resistor. Remember this point. The current जो कुछ भी आ रहा है, that is going to this particular resistor. Except resistor, there is no other component. Except resistor, there is no other component. So current series में आएगा. Okay, clear? Srishti Singh, what I want to tell you here is I will be discussing the concept through the questions, okay? So that आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है ना बेटा. क्रैश कोर्स में हमने क्वेश्चंस के रूप में आपको कॉन्सेप्ट भी देना चाहता हूं. एंड ऑलवेज रिमेंबर, दीज आर दी स्टैंडर्ड मॉडल क्वेश्चंस. ये मॉडल क्वेश्चंस में मैं जो कुछ कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट आप रिपीटेडली यूज कर सकते हैं. रिपीटेडली आप यूज कर सकते हैं. ओके, चलो चलो, नाइस. Any other doubts? Any other doubts? Gajendra Singh, you can ask me any other doubts. Gajendra Singh, you are telling that this ammeter is not measuring current through unknown resistance. Please reason. Ammeter always connected in series. Always connected in series. That means the current whatever is delivered from the voltage source, that is going to enter into the resistor. So the current which is shown by the ammeter, that is nothing but the current passing through the resistor. Is it clear? We cannot connect. Okay, right. Chalo, let us go for the next question. Yeah, this question actually oldest question hai, but try to answer. A precise measurement guarantees accuracy of the measured quantity, true or false. मैंने selective questions discuss कर रहा हूं. ये selective questions very repeatedly ये concept के ऊपर questions आने के chances बहुत है. Yeah, this is true or false. Please tell me. False. इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का टेस्ट. चेतन जी, आपको पहले ये पर्टिकुलर सेशन को आंसर सेशन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए. मैंने बोल रहा हूं आपको, ये पूरा क्रैश कोर्स ऑफ EEC होने के बाद एक्सक्लूसिवली फॉर आईएन लोगों के लिए हम प्लान कर रहे हैं. ओके, इफ यू आर हैविंग एनी इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड नोटिफिकेशन, आई एम द पर्सन, आई एम गोइंग टू लेट यू नो. Okay, right now we are in a hurry to close the electrical and EC content first. उसके बाद जल्दी से जल्दी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी आपको मिलेगा कंटेंट. प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास हियर, क्योंकि सेशन का टाइम बहुत अमूल्य है. सेशन का जो कुछ टाइम है जो बहुत प्रीशियस है. तो प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चंस. आई वांट टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस माय डियर. टाइम इज वेरी वेरी प्रीशियस. This question आंसर कर दिए जल्दी. A precise measurement guarantees accuracy of the measured quantity, true or false. Please, how many of you are telling false or true? Please answer that. I am expecting in the comments what actually I want. True or false? फटाफट. True. False. प्रतीक शर्मा बोल रहे false. What about others? What about others, my dear? True. फटाफट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना है व्हाट इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी बोलो तो क्या है माय डियर? एक्यूरेसी मींस क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू माय डियर. एक्यूरेसी बोलो तो क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, सिंपल वर्ड्स में. नेक्स्ट, प्रेसिशन बोलो तो क्या है माय डियर? प्रेसिशन. प्रेसिशन बोलो तो क्या है? It is a measure of repeatability. You should have certain technical terms in your mind. ये टॉपिक्स जो कुछ है ना, ये टॉपिक्स आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं. एबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, प्लीज कीप इन योर माइंड. इट इज अ मेजर ऑफ रिपीटेबिलिटी. ओके ओके, रिफर करो, लेकिन क्वेश्चन सफल हो सकता है. क्वेश्चंस आई विल ऐड बिकॉज आई विल बी टेकिंग द कलेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ EE एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. ओके,
Chetan ji, I will be taking the questions of EE and instrumentation. Don't copy it. Okay. Repeatability means what? Repeatability बोलो तो ability. Ability means ability to repeat. Ability to repeat the same output. Ability to repeat the same output, my dear. So please try to be interactive in the session. This session is not for copying and telling. Okay. मेरा एक्सप्लेनेशन अलग तरफ से होता है, बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं लाइव सेशन में. ओके, दैट इज अ एडवांटेज ऑफ लाइव सेशन. लाइव सेशन में आपको फैकल्टी से बहुत सारा टाइम लगेगा इंटरेक्शन करने के लिए. रिकॉर्डिंग इज नॉट ए डिफरेंट एंड लाइव क्रैश कोर्स इज डिफरेंट. ओके, तो लिसन हियर. एबिलिटी टू रिपीट द सेम आउटपुट. सी, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी के बारे में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई वांट टू टेल यू माय डियर, these are certain characteristics. Remember, we are having certain characteristics. Let me talk about the characteristics. Yeah, there are certain characteristics, my dear. Please make a note of these characteristics. Accuracy, precision, threshold, resolution, repeatability, reproducibility, range, span, dead space, dead band. Okay, these are all certain characteristics called static characteristics of instrument. Okay, static characteristic. Okay, thank you. Old students, welcome to the class. These are all static characteristics, my dear. And dynamic characteristics alag hai. What are the dynamic characteristics? Fidelity, transfer function, okay, and we have forgotten one more thing, sensitivity. Sensitivity is a static characteristics. Sensitivity. So I am giving it as a task to you. Please work out certain time for this particular understanding, because most of all the questions that is framed, जो कुछ questions frame हो रहा है measurements पर और instrumentation पर, definitely आपको ये particular concept को touch करेगा. ओके, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आपको टच होगा, इसलिए आपको माइंड में आपको ये पर्टिकुलर डेफिनेशंस आपका माइंड में फिक्स होना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, माय डियर? Accuracy is the closeness to the true value. Precision is a measure of repeatability. Suppose if you are measuring a 5 volts output in a circuit, electronic circuit, there is a 5 volts output है, आपने एक वोल्टमीटर यूज करके 5 volts को लेना चाहते हैं, लेकिन आपका वोल्टमीटर का रीडिंग फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर गेटिंग द 4.5 volts, my dear. 4.5 volts, is it a true value? No, it's not a true value. Second time you have done the experiment, second time you have done the measurement, this time you are getting 4.501 volt. Third time when you are doing that experiment, you got 4.499 volts. Okay, and fourth time when you are doing that experiment, you got 4.502 volts, like this. Now these values are highly precise. You understand? Or suppose if the value of measurement, suppose let me take the 6 volts. Okay, let me take 6 volts so that no confusion. 6 volts is the output actually I have to get. So this output I have to get is 6 volts, but what I am getting is 4.5 volts. Please tell me, these values are precise or accurate? Please fatafat बताइए. Suraj bhai, static characteristics means the characteristics which are changing, which are not changing with respect to time.
characteristics of the instrument which are not going to be changed with our respect to time. Dynamic characteristics means they are going to change with respect to time. Okay, chalo. They are precise but not accurate, my dear. Okay, so these are precise, not accurate. Why? Because they are not close to the true value. So what I can say, these are precise. Precision is good, but accuracy is poor. Accuracy is poor because 6 volts is the true value, but what is the gap I am having? The gap is more than 1.5 volt. But suppose second group is doing, another group is doing the experiment. So this time they are getting the values like this: 5.9 volts, 5.85 volts. Third one we are getting some 6.01 volts. Fourth time one poor person is getting 5.99 volts, like this. Now tell me, these values are accurate at the same time. If you observe, their accuracy is good. Why? Because they are very close to each other, very close to the true value, very close to the true value. At the same time, if you see, those values are almost repeatable. Nearest values 5.9, 5.8, 6.0, 5.99. They are highly accurate or not? Accuracy is excellent. At the same time, precision is also good or not? You understand second setup? Very good. Accuracy and as well as precision. Both are na? Accuracy and precision, because it is ability to repeat. Almost the same value is going to be repeat: 5.9, 6.01, 5.99. You're almost, whatever the number of times that you're doing experiment, you're getting closer. So what does it mean? A highly accurate instrument automatically highly precise. But a highly precise instrument is not an accurate instrument. Is it clear or not, dear? Got it? Sound nahi aa raha hai. Sound is absolutely coming, Mr. Pramit. Don't disturb the class. Okay. All of you got it now? So precision and accuracy, if you compare, a highly accurate instrument is automatically precise, but a highly precise instrument may not be accurate. Is it clear or not? Is it clear or not? See, one more example I want to give you. A better example I want to give you. Now tell me, what is the, okay, we will save the time, not going for that. Too much of explanation is not required. I hope all of you understood. So the right answer is false. The right answer for this question is false, my dear. Because a precise measurement guarantees accuracy. No. Okay, precision may not guarantee the accuracy, but accuracy guarantees the precision. The opposite is true. So what we can write? What we can write? A highly precise, highly accurate instrument a highly accurate instrument is a precise also, but the vice versa may not be true. The vice versa may not be true. Please make a note of this point. Please make a note of this point.
यस ओके मैं दे रहा हूं. इन शॉर्ट आई विल गिव यू, डोंट वरी. ओके इन शॉर्ट आई विल टेल यू. ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस? बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अभी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो डिफरेंट फॉर्म में आपको देने की चांसेस है, डिफरेंट फॉर्म में आपको देने की चांसेस है, क्योंकि अभी चांसेस आर देयर आस्किंग एन एमएसक्यू. सी यू कैन गेट एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. मेरा इंटेंशन क्या है कि एमएसक्यू भी आने की चांसेस है आजकल, तो एमएसक्यू के लिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अंडरस्टूड है प्लीज शो मी सम सिंबल ऑफ एक्सप्रेशन बिकॉज आई एम वाचिंग योर कमेंट्स. ओके चलो चलो somebody was asking sir please tell some in brief about these characteristics. Okay so please make a note fatafat. Accuracy means closeness to the true value, how far your measurement is closeness to true value. Okay next precision already I told you it's a measure of repeatability. Next this is also important my dear, threshold and resolution. Please make a note. What is the threshold? Threshold means it is the minimum input to be given, minimum input to be given for a system to get a response. I don't want to spend much time here because बहुत सारा क्वेश्चन है करने के लिए. It's a minimum input to be given for a system to get a response. Response बोलो तो क्या है? non-zero output. Next resolution, the minimum increment in input to be given so that there is a modification in the output. समझ रहे हैं आपको? थ्रेशोल्ड एंड रिजोल्यूशन के बीच में अंतर क्या है? थ्रेशोल्ड बोलो तो मिनिमम इनपुट टू बी गिवन सो दैट द सिस्टम कैन स्टार्ट रेस्पॉन्स फ्रॉम जीरो टू नॉन जीरो. एक सिस्टम है उसका नीडल 0 पॉइंट तक है, आपने कितना इनपुट देना है? थ्रेशोल्ड पॉइंट कितना इनपुट देना है सो दैट आपको मूवमेंट चालू होगा. दैट इज व्हाट वी कॉल थ्रेशोल्ड. रिजोल्यूशन बोलो तो क्या है? एक बार चालू होने के बाद उसमें आप मॉडिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर आपने एक बार नॉन जीरो रिस्पांस आने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे, वो मॉडिफिकेशन के लिए आपने कितना इंक्रीमेंट देना है इनपुट में, दैट पर्टिकुलर इनपुट को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ थ्रेशोल्ड एंड रिजोल्यूशन. जितने लोग अंडरस्टूड है प्लीज राइज द हैंड्स. थ्रेशोल्ड एंड रिजोल्यूशन के बीच में अंतर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेशोल्ड एंड रिजोल्यूशन both are related to input side. Thank you. Threshold and resolution both are related to input side my dear. Threshold बोलो तो minimum input to be given to get a response. मैं अच्छा एग्जाम्पल देता हूं आपको. आप एक एग्जाम लिख रहे हैं, एग्जाम में पास होना है, पास इज अ थ्रेशोल्ड, ऐसा नॉट? 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स के लिए 35 मार्क्स आए तो आप पास है. लेकिन 35 मार्क्स आने के लिए आपने कितना क्वेश्चंस लिखना है? फॉर एग्जांपल ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स. नाउ व्हाट इज द थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड इज 35 मार्क्स are 3 questions are. Suppose if you take 12 marks for each question, 12 marks for each question, 3 क्वेश्चंस आंसर करें तो आपको 36 मार्क्स आएगा, 36 मार्क्स आएगा. तो पास मार्क इज 35. If you get 35 marks, you are going to get pass. Now please tell me what is the threshold here? The threshold is 36 or 35 marks or the 3 questions. That's what I want to answer from you. You understand my question? Once again I'm asking you, there is a question paper of 100 marks. In that 100 marks, you have to get 35 marks as a pass mark. But to get 35 marks, the minimum number of questions that you have to answer is 3. Now tell me, is the 3 is the threshold or 35 marks is the threshold? Excellent. Satish Kumar, excellent. 3 is the threshold. Always remember my dear, threshold is related to input side. This fundamental you have to remember. Threshold is related to input side, not the output side. Okay sir, हो गया. आपने 3 क्वेश्चंस लिखा, 3 क्वेश्चंस लिखने के बाद आपको 35 मार्क्स आ गया, आपको पास कंफर्मेशन हो गया, आपका लाइफ स्टार्ट हो गया, इंस्ट्रूमेंट का लाइफ स्टार्ट हो गया. उसके बाद
3 क्वेश्चंस के बाद आप जितने क्वेश्चंस लिखते हैं, आफ्टर द 3 क्वेश्चंस हाउ मेनी क्वेश्चंस दैट यू आर आंसरिंग, बेस्ड ऑन दैट आपका ग्रेड चेंज होता है। अगर 3 क्वेश्चंस के बाद अगर आपने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखा, सही लिखा, 4 क्वेश्चंस बोलो तो आपका मार्क्स 48 मार्क्स, यू विल बी हैव फ्रॉम पास टू थर्ड क्लास or third grade. Agar after the 3 questions you have written 2 more questions, that means your score is going to be plus 12 24, that means your score is jumping to 50 plus, then your grade will be second grade. After the 3 questions you have written 3 more questions, that means 36 plus 36 you are entering to 72, that means your grade will be jumping to first grade. That means what? Pass is the life. उसके बाद कितना इंक्रीमेंट हो रहा है आपका स्कोर में, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड योर ग्रेड. तो टू गेट अ पर्टिकुलर ग्रेड, कितना इंक्रीमेंट दे रहे आप इन द इनपुट साइड, कितना इंक्रीमेंट दे रहे हैं, वो इंक्रीमेंट को हम बोलेंगे रिजोल्यूशन. समझ में आपको? द मिनिमम इंक्रीमेंट इन इनपुट टू बी गिवन सो दैट देयर इज अ मॉडिफिकेशन in the already available output. Please make a note of this point, my dear. Please make a note of this point. The minimum increment to be given in the system at input side so that there will be a modification in already available non-zero output. आपके आउटपुट में कुछ है, उसमें मॉडिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे, वो आउटपुट में मॉडिफिकेशन के लिए आपने कितना इंक्रीमेंट देना है, उसका हम बोलते हैं रिजोल्यूशन. समझ में आपको? आपके पास आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स है क्लास में, आपके पास रेगुलेटर पावर सप्लाई है, लैब में देकर रेगुलेटर पावर सप्लाई, एक नॉब रहता है, एक नॉब को ऐसा आपने 1 mm और 1 micrometer ऐसा टिल्ट करते हैं, then the voltage in that particular regulator power supply will be changing from 1.0 volts to 1.2 volts, 1.4 volts. अगर आपने ये नॉब को ऐसा नहीं रोटेट करे, वेरी स्लोली रोटेट कर रहे, द रीडिंग इज 1.0 वोल्ट्स ओनली. व्हेन यू आर रोटेटिंग बाय 1 mm और 2 mm, देन यू आर गोइंग टू गेट 1.2, 1.3. कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो मॉडिफिकेशन होने के लिए कितना इनपुट देना है, कितना इंक्रीमेंट देना है, उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन. गॉट इट? यस. डिक्रीमेंट नहीं, इंक्रीमेंट बेटा, इंक्रीमेंट. क्योंकि मॉडिफिकेशन कैसा होता है, मॉडिफिकेशन कैसा होता है, एक स्टैटिक पोजीशन से ऊपर जाना है. ओके, तो मीनिंग अलग अलग नहीं देखना है आपको. इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल के बारे में कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि आप मुझे मॉडिफिकेशन होना है बस. ओके, क्लियर? थ्रेशोल्ड एंड रिजोल्यूशन क्लियर? फटाफट प्लीज शो मी थम्स अप, बिकॉज स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी डाउट्स. फर्स्ट क्लास आई एम गिविंग यू द मच एक्सप्लेनेशन, बट नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल फोकस मोर ऑन द क्वेश्चंस. ऑल ऑफ यू क्लियर? थ्रेशोल्ड मींस जितने लोग आप नोट्स लिख रहे, जितने लोग आप रनिंग नोट्स लिख रहे, डेफिनेटली दोस पीपल आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड. बेटा ये सेशन जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सेशन गेट के लिए नहीं है केवल, गेट के बाद आप जो कुछ भी नॉन गेट एग्जाम लिखना चाहते हो उसके लिए भी आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा मिलेगा इधर. ओके, द मिनिमम इनपुट टू बी गिवन फॉर ए सिस्टम टू गेट ए रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड. The minimum input to be given for a system to get a response. When I am saying a response, that is from non-zero to zero output. Sorry, zero to non-zero output. Zero to non-zero output. एक बार आउटपुट आ गया, एक बार पास हो गया आपने, पास होने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करते हैं ना. पहले तो आप जॉब एक्सपेक्ट कर रहे, आप सब लोग अभी अनएम्प्लॉय है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप एक अच्छा नौकरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ओके ना? एक बार नौकरी आ गया, दैट मीन्स यू हैव अचीव्ड द थ्रेशोल्ड. आपका लाइफ स्टार्ट हो गया, योर लाइफ इज स्टार्टेड. वंस यू गॉट ए जॉब, योर लाइफ इज स्टार्टेड. अंटिल यू डोंट हैव ए जॉब, पॉकेट में पैसे नहीं है, सबके लिए आपने माँ बाप के पास रिक्वेस्ट कर रहे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए. अब तो चलेगा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक चलेगा. फोर्थ ईयर होने के बाद क्या होगा, यू कैन नॉट आस्क. तो आपका लाइफ, आपका थ्रेशोल्ड कब स्टार्ट होगा, आपका थ्रेशोल्ड आपको एक कैंपस प्लेसमेंट और एक पीएसयू और कोई ना कोई जॉब आने से आपका थ्रेशोल्ड स्टार्ट होगा. दैट इज योर थ्रेशोल्ड. लेकिन थ्रेशोल्ड होने के बाद सैटिस्फाई होता है नहीं, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे मेरा प्रोफेशन में, दैट इज व्हाट रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन इज ऑल अबाउट द इंक्रीमेंट माय डियर. यस, ऐसा क्वेश्चंस कैसा पूछते हैं मैं एक बार बताता हूं. आपको. एक क्वेश्चन है मेरे पास, आई विल शो यू वन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. जस्ट वेट.
I want to, as the people are asking, just for example, there is a voltmeter. This electronic measurements question, 0 to 10 volts is the voltmeter. Okay, my dear, 0 to 10 volts is the voltmeter. Thank you, Ananja Bose. Thank you, thank you. 0 to 10 volts is a voltmeter, my dear. Okay, this is a voltmeter. The resolution of this meter, the resolution of this voltmeter is 0.1 volt. Please try to understand this question carefully. Resolution of voltmeter is 0.1 volt. Yeah, resolution of voltmeter is 0.1 volt. What does it mean? The minimum increment that is detectable by this voltmeter is how much? 0.1 volt. Now this particular voltmeter I am attaching in a Wheatstone bridge. Please see the quality of this question, my dear. Please see the quality of this question, my dear. So there is a resistor here. So this is a supply voltage. Let us take the supply voltage is some 5 volts. Okay, and here there is this voltmeter. That voltmeter whose range is 10 volts and whose resolution is 0.1 volts is attached in a bridge circuit like this. Now if you see here, this particular resistance, all of you are attentive in the class, this particular resistance is changing by some del R. Initial resistance is 1000 ohms. All the resistance are 1K, 1 kilo ohm. Please be attentive in the class. See, kaisa question frame ho sakta hai? Very good. No, change in output by change in input is not resolution, Himanshu. Himanshu, change in output by change in input is sensitivity, my dear. Himanshu, that is sensitivity. That is not resolution. Change in output by change in input. Delta y by del x. y2 minus y1 by x2 minus x1. That is called sensitivity. Clear? Sensitivity अलग अलग नाम है. मैथमेटिक्स में सेंसिटिविटी को हम स्लोप बोलते हैं. y2 minus y1 by x2 minus x1 को मैथ्स में हम स्लोप बोलते हैं. इन कंट्रोल सिस्टम y of s by x of s को हम सेंसिटिविटी हम ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं. ऑप-एम्प्स में आउटपुट बाय इनपुट को हम गेन बोलते हैं. नेटवर्क्स में इनपुट बाय आउटपुट को हम अटेन्युएशन फैक्टर बोलते हैं. डेल्टा y by delta x को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं. डेल्टा y by delta x is not resolution, my dear. Is it clear? चल, please answer this question. There is electronic circuit which is called Wheatstone bridge. Supply voltage is 5 volts. 4 रेसिस्टर से एक रेसिस्टेंस 1 किलो ओम है. इसमें एक डेलार चेंज हो रहा है. And actually I am kept a voltmeter. This is initially, this resistance is also 1 kilo. Now tell me, the question asked is the resolution of bridge is dash ohms. How to answer this question? Very tricky question. How many of you understood the question, my dear? Chetan ji, are you there? You cannot find these questions in the one shot series. Okay, फैकल्टी को लाइव में देखना, लाइव में फैकल्टी से इंटरेक्ट करना, ये एडवांटेज है. ओके, चलो, ये क्वेश्चन आपको समझ में, आपको
आई हैव टेकन ए व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेसिस्टर्स है, एक रेसिस्टेंस इज 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, सब सेम है इन द बिगिनिंग। इन द इनिशियली व्हीटस्टोन ब्रिज आउटपुट वोल्टेज विल बी 0 क्योंकि ब्रिज का वोल्टेज बैलेंस हो चुका है। सप्लाई वोल्टेज इज 5 वोल्ट्स माय डियर। लेकिन आई हैव अटैच्ड वोल्ट मीटर, इसका इंपेडेंस इंटरनल रेसिस्टेंस इज इनफाइनाइट है, इसका मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है। ओके, मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफिनिट है एंड द रिजोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वोल्ट मीटर इज 0.1 वोल्ट है। क्वेश्चन मैं क्या पूछ रहा हूं, द रिजोल्यूशन ऑफ द ब्रिज इन ओम्स, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ मच चेंज इन रेजिस्टेंस। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट सतीश कुमार। एक बार सतीश को थम्स अप दिखाइए। व्हाट शुड बी द मिनिमम, व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ द ब्रिज हियर? सी व्हेन द ब्रिज, द मिनिमम इंक्रीमेंट माय डियर, yeah, the minimum increment or change in resistance to be given so that there will be a detectable increment in a voltmeter. What is the detectable increment in voltmeter? That is 0.1 volts. The question here is, what should be the value of delta R which can generate 0.1 volt? समझ गया आपको? रेवन जी समझ गया आपको? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब लोग इंटरेक्ट कर दो, जितने लोग लाइव में सेशन को देख रहे, प्लीज ट्राई टू इंटरेक्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम। फटाफट इंटरेक्शन दीजिए, बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने की चांस है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू, जितना डेल्टा आर चेंज करना है, कितना डेल्टा आर चेंज करना है, चेंज बोलो तो क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम? रिजोल्यूशन इज ऑलवेज मिनिमम बेटा। व्हाट इज द मिनिमम डेल्टा आर आई हैव टू गिव? Minimum delta R I have to give so that there is a detectable change in the voltmeter value. The detectable change कितना है? 0.1 volt. समझ में आपको? Suppose the voltmeter is at 2 volts. If the pointer starts moving, the minimum increment move is 2.1 volt. The maximum may be 10 volts. Why? Because the maximum is up to 10 volts ना. But maximum is not the resolution, my dear. Clear है? देखो क्वेश्चन कैसा पूछा। Always remember, resolution is related to input side, not output side. The minimum increment in resistance, this is a change, this is the input, this is the output. The minimum increment in resistance to be given so that there is a modification in the output. So Wheatstone bridge के एक फार्मूला है, Wheatstone bridge टॉपिक में पढ़ाऊंगा, बट हियर मैं बोल रहा हूं, अगर 4 रेसिस्टेंस इक्वल है, उसमें all resistors are equal in the beginning and one of the resistance is changing by del R, then bridge का एक expression है my dear. So that expression है V bridge that is equal to Vs by 4 into delta R by R. Please make a note of this point. Please make a note of this point. I am not going to prove it. It's a waste of time here. It's not required in this session. Please make a note on this. Definitely आपको एक क्वेश्चन आने की चांस है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। So V bridge कितना लेना है? Supply voltage is 5 volts by 4. Initial resistance is 1000 ohms. Delta R मुझे चाहिए. What should be the value of delta R so that there is a minimum increment? What is the minimum increment that I am going to see? The minimum increment is 0.1 volt. So that is the minimum increment. That was a question asked. What is the minimum increment in resistance so that there is a minimum increment in voltmeter is expected? जितने लोग को clarity आ गया वो आंसर देख सकते हैं। आंसर कितना आ रहा है? 83 ohms. ओके, आप कैलकुलेशन कर दो फटाफट। 4400 0.1 into 4000 1 by 10 400 by 5 20 ohms ना, sorry 80 ohms ना, delta R is coming 80 ohms, right? 80 ohms ना, Ananja boss, answer is 80 ohms ना। अच्छा, आप चेंज किया आपने, हाँ। प्लीज डोंट मेक द मिस्टेक्स, ओके, सिली क्वेश्चंस को मिस्टेक्स मत करना।
The minimum increment in resistance, okay, 80 ohms is the right answer. फटाफट, okay. So बेटा मैं sequence sequence में जाएंगे अभी questions को. Yeah, please try to go for remaining topics. We'll discuss when the situation comes. I will discuss, okay, what is the sensitivity, what is the repeatable, what is the range span. Questions के बारे में हम discuss करेंगे. Let us move for the next question. So try to answer this question. फटाफट. All of you please go through. This question was asked in IIT Kanpur. IIT Kanpur 1995 में पूछ दिया question को. Please go through the question, take your some time and try to answer. Sorry, meter 4 है इधर. This one M. Meter 4. Very good. So this question is all about a concept called accuracy of percentage of full scale, and how to understand this question. So first of all, you should understand what is the percentage of guaranteed accuracy error. The percentage of guaranteed accuracy error बोलो तो क्या है? फटाफट. Excuse me. The guaranteed accuracy error is the percentage error with respect to full scale value. First point. And it is guaranteed, which is guaranteed. That means if you purchase a instrument, ये इंस्ट्रूमेंट से अगर आपने फुल स्केल वैल्यू मेजर करे तो आपको मिनिमम टू मिनिमम ये एरर तो पक्का आएगा. वो एरर को हम बोले तो गारंटीड एक्यूरेसी एरर है. समझ गए आपको? I think it is guaranteed accuracy given in question, not accuracy. Anand Bose, when accuracy is expressed in terms of error, when accuracy is expressed in terms of error, उसको हम बोलते हैं guaranteed accuracy error. Please make a note of this point, Anand Bose. Accuracy को express करने के तरीका is nothing but error. Accuracy को हम कैसे express करते हैं? Accuracy को express करने की methodology है guaranteed accuracy. Please make a note. जो लोग experienced लोग हैं, जो लोग already measurement subjects को और instrumentation subjects को already have some practice, they may be asking such type of questions. Okay, I know some of the students are good students. They're already written the GATE exam 1 or 2 times. They may be getting the doubts here. But the students who are related to second year and third year, sir, I don't know the question. Pratik Sharma, I don't know the question. Try to understand. Pratik Sharma, you are from which branch? Which year? Go through the question, no problem. मजा. Electrical. Okay. See here. When you are purchasing an instrument, फटाफट, when you are purchasing an instrument, जितने लोग second years, third years है, जितने लोग second years, third years है, एक बार मुझे hand, please show your hand. Second years, third year students. When you are making an instrument, when you are purchasing an instrument, I am having a voltmeter. The full scale value is 5 volts. So this is what we call full scale value. इसको हम बोलते हैं full scale value बोलते हैं. Full scale value बोलते हैं. And the manufacturer says, the manufacturer, what he says now, suppose the manufacturer says 2% error at full scale value. आप कितने भी केयर
कितने भी अटेंशन करो, कितने भी टेकिंग केयर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, आप जितना केयर लेते ही, आप हाउ मच केयर एवर यू वांट यू कैन टेक इट, बट स्टिल अगर आपने ये इंस्ट्रूमेंट चूज करके मैक्सिमम वोल्टेज को मेजर करे तो कितना एरर आएगा? 2% एरर आएगा। 2% एरर बोलो तो कितना है? 2% ऑफ फुल स्केल वैल्यू। फुल स्केल कितना है? 5 वोल्ट है। 10/100 दैट इज 0.1 वोल्ट। दैट मींस आपको मिलेगा 5 वोल्ट नहीं, 5 वोल्ट प्लस और माइनस 0.1। दैट मींस आपको 4.9 और 5.1 आने की चांसेस हैं। दिस इज पक्का, गारंटीड। लॉक कर दीजिए, बांड पर लिख दीजिए। कब? अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज करके फुल स्केल वैल्यू मेजर करें तो। समझ गया प्रतीक जी आप? समझ गए आपको प्रतीक जी? दिस इज व्हाट वी कॉल गारंटीड एक्यूरेसी एरर। गारंटीड एक्यूरेसी एरर हमेशा फुल स्केल वैल्यू से ही एक्सप्रेस करते हैं। गारंटीड एक्यूरेसी एरर, देखो सेंटेंस, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। क्या गारंटी दे रहा हूं? एरर का गारंटी दे रहा हूं। कितना एरर? 2%। कहा सर? फुल स्केल वैल्यू से। इज दैट, प्लीज मेक नोट ऑफ दिस पॉइंट। मजा आ गया? मजा आ गया? अगर आपको मजा आया तो थोड़ा, आपको पता है ना ये YouTube क्रैश कोर्स का एनर्जी क्या होता है? आपको YouTube क्रैश कोर्स का, YouTube का व्यूज और रेवेन्यू कैसा जनरेट होता है आपको पता है। मैं बार बार नहीं बोलना चाहिए आपको। आप बच्चे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे नहीं है। कुछ कमेंट्स, कुछ सिंबल्स, कुछ एक्सप्रेशन, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ धमाका होना है। ओके चलो, 4.9 और 5.1 is going to come. This is what we call guaranteed accuracy error. Always please make a note of point. Guaranteed accuracy is always with respect to full scale value. First point, it is given by manufacturer, not by you or not by any scientist, it not by any environment, not by God. It is given by manufacturer. First point. Second point, always with respect to full scale value. Third point, always constant, always fixed, not changing. So this is what we call guaranteed accuracy error. जितने लोग फर्स्ट टाइम लिख रहे गेट एग्जाम को और जितने लोग फर्स्ट टाइम ये एरर एनालिसिस को, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन फटाफट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये इसको हम बोलते हैं प्यार, बोलते हैं दिस पर्टिकुलर सेशन को हम बोलते हैं प्यार। फटाफट। All of you clear now, my dear? चलो, this is what guaranteed accuracy error. There is another error called percentage of limiting error. Please make a note. There is another error called percentage of limiting error. अगर आपने ये इंस्ट्रूमेंट, सेम इंस्ट्रूमेंट 0 to 5 volts, and what is a guaranteed accuracy error? 2%. Okay, now up to this clear? Now ये इंस्ट्रूमेंट यूज करके अगर आपने एक अलग वैल्यू को मेजर कर रहे, अनदर वैल्यू को मेजर कर रहे विच इज लेसर देन फुल स्केल वैल्यू, अगर आपने फुल स्केल वैल्यू पर मेजर कर रहे उसी समय आपको जो एरर मिलेगा उसको हम बोलते हैं गारंटी एक्यूरेसी एरर। मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। If you are using this instrument which is having a guaranteed accuracy error of 2% to measure
ए वैल्यू विच इज लेसर देन द फुल स्केल वैल्यू, एट दैट टाइम आपको एरर आएगा, यस आएगा, क्योंकि फुल स्केल वैल्यू पर एरर आ रहा है बोले तो डेफिनेटली लेस देन द फुल स्केल वैल्यू भी आपको एरर आएगा। लेकिन ये एरर किसके रूप में आ रहा है, आपका जो कुछ वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू मेजर उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने 2 वोल्ट्स मेजर कर रहे हैं, और अगर आपने 3 वोल्ट्स मेजर कर रहे हैं, अगर आपने 4 वोल्ट्स मेजर कर रहे हैं, बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर वैल्यू दैट यू आर मेजरिंग आपको एरर लिमिट हो रहा है, सो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लिमिट। दैट मीन्स एरर लिमिटेड फॉर योर मेजरमेंट, इट्स नॉट फॉर फुल स्केल, error limited for your measurement. For example, if I'm using 2 volts measurement, suppose let us take 2 volts. If by using 2 volts, clear hai? Yes. If you are measuring the 2 volts, on 2 volts, what is the error? Remember, if you are taking 2%, so what is the error we got? So 5 volts per 2 volts percentage guarantee is kitna aaya? 5 by 200, that means 0.1 volt aa gaya na? So that was your guaranteed accuracy error na. Now if you take error limited for measurement of 2 volts कितना है? If you are expressing for 2 volts measurement कितना percentage आएगा? That means I want to limit the error. I want a limiting error now. So how to do this? So you are expressing this particular error with respect to this 2 volts measurement के लिमिट कर रहे हैं, 2 volts measurement को लिमिट करें तो कितना आएगा, चेक करो। How much percentage? Percentage error limited for a measurement of 2 volts कितना आ रहा है? 5% आ रहा है ना? You are going to get 5%. Listen carefully. 5% is the limiting error in percentage when you are measuring 2 volts. 2% is the error when you are able to measure 5 volts. समझ में आपको? 2% is the error with respect to full scale value, but 5% is the error with respect to your measurement. That's what इसको हम बोलते हैं limiting error. Error limited for your measurement. Clear हो गया अभी? हाँ, एक बार देखो 5% ऑफ मेजरमेंट, 5% ऑफ मेजरमेंट बोलो तो कितना है बेटा? 5% ऑफ मेजरमेंट बोलो तो 5/100 इंटू आपका मेजरमेंट कितना है? 2 वोल्ट्स, कितना आ गया? 5 into 2 10/100, दैट मीन्स 0.1 आ रहा है, 0.1 आ रहा है। देखा, ये 0.1 का मैग्नीट्यूड तो सेम है। Do you understand this point? You are getting a 0.1. That means when you are measuring 2 volts, you may be getting 5% of 2 volts. 5% of 2 volts कितना आ रहा है बेटा? 5% of 2 volts कितना आ रहा है? 2 into 5/100, 10/100, 0.1. That means आप when you are measuring 2 volts, you are going to get either 1.9 or 2.1. You understand, my dear? Perfect. मजा आ रहा है? मजा आ रहा है आपको? अगर आपने ये इंस्ट्रूमेंट चूज करके अगर 2 वोल्ट्स का मेजरमेंट कर रहे हैं, आपको एरर कितना आ रहा है? 0.1 आ रहा है, 1.9 to 2.1। जितने लोग आईएन का लोग है इधर, आईएन का लोग को भी मैं एक अनाउंसमेंट दे रहा हूं। अभी शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 वीक के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों के लिए और इलेक्ट्रिकल बच्चों विच हु आर इंटरेस्टेड टू राइट इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर, उसके लिए भी हम एक प्लान लेके आ रहे हैं। गेट वाला से एक सीक्रेट प्लान है, वी आर गोइंग टू अनाउंस। डेफिनेटली आईएन लोगों का भी बेनिफिट हो जाएगा। तो प्लीज फॉलो आईएन स्टूडेंट। जितने सब्जेक्ट्स हम दे रहे हैं आपको, कॉमन सब्जेक्ट्स अब तक हो चुका है, सिग्नल्स एंड सिस्टम चल रहा है, सिद्धार्थ सिबरवल का सर क्लास हो गया, चंदन सर का क्लास हो गया, दीप्तांशु सर का क्लास हो गया। तो ऑल कॉमन सब्जेक्ट्स प्लीज ट्राई टू कंप्लीट। आईएन का बच्चा आपको मालूम है, आपका कोर सब्जेक्ट से आपको 13 to 15 मार्क्स आएगा, लेकिन रिमेनिंग टोटल वेटेज इज कमिंग फ्रॉम core subjects. So first try to complete the common subjects. आप common subjects इतना प्रिपरेशन के लिए आपको हमने एफर्ट्स कर रहे, वो एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करके जस्ट हैव द बिलीफ, डेफिनेटली आईएन लोगों के लिए जरूर मैं एक यूट्यूब सेशन प्लान करके आता हूं। ओके माय डियर, चल अभी समझ में आपको 0.1 कितना आ गया? देखो
इधर 0.1 इधर 0.1 सेम है, बट इधर 2% एंड इधर 5% सेम नहीं है। 2% is with respect to full scale value, 5% is with respect to the present measurement value, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग एरर बोलते हैं। मजा आ गया? सो व्हाट यू अंडरस्टैंड, दिस 0.1 को हम लिमिटिंग एरर बोल सकते हैं, लेकिन परसेंटेज को हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर। तो विच इज फिक्स्ड, विच इज वेरिएबल? प्लीज ट्राई टू कमेंट देयर, प्लीज ट्राई टू कमेंट देयर। अभी भी चंदन सर आ गया लाइव में। गुड इवनिंग चंदन सर, इज द एनर्जी सेंटर ऑफ अवर गेट वाला। ओके, हम सब लोग बहुत सारा इंस्पायर होते हैं। विशाल सोनी, चंदन सर, ये टीम है ना, ये टीम जो कुछ एफर्ट्स कर रहे। एवरी डे विल डिस्कस, एवरी डे विल हैव ए प्लान, एवरी डे। अब तक जो कुछ ऑलमोस्ट एक 1.5 मंथ हो गया गेट वाला में क्लास स्टार्ट होके, 1.5 मंथ और मैक्सिमम 2 मंथ्स भी नहीं हो गया, लेकिन सब्सक्राइबर्स का लिस्ट देखियो, बच्चों का प्यार देखो, जितने लोग मुझे डेली मैसेज करते हैं, आईएन के लोग एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स का स्टूडेंट्स, जितने लोग, क्रैश कोर्स कब स्टार्ट होगा सर, क्रैश कोर्स कब स्टार्ट होगा? मैंने बोल रहा हूं प्लीज फोकस ऑन योर कॉमन सब्जेक्ट्स फर्स्ट। डेफिनेटली आपको हर सब्जेक्ट का फुल गाइडेंस मिलेगा। वेरी गुड, सो प्लीज नोट डाउन, please note down the point here, one more point. What is the point here? Limiting error, please note down, limiting error is constant. Percentage limiting error, percentage limiting error variable. Please make a note of, please, what I'm interested here, not interested in that answer beta. Answer तो आएगा आपको, अगर कोई ना कोई इंस्टीट्यूट का बुक और कोई ना कोई वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ओपन करे तो आपको आंसर मिलेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के बैकग्राउंड में क्या कॉन्सेप्ट है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिक्स हो गया एक बार, डेफिनेटली हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट क्वेश्चंस आर रिपीटेडली आस्क्ड और शफल्ड और मॉडिफाइड, आप आंसर कर सकते। प्लीज राइज द हैंड्स, जितने लोगों को गारंटीड एक्यूरेसी एरर पर, लिमिटिंग एरर पर क्लैरिटी आ गया। मैंने 2 पॉइंट्स बॉक्सेस में लिखा। एवरीबडी प्लीज मेंटेन ए शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स में आप ये बॉक्सेस में जो कुछ मैं लिख रहा हूं, प्लीज मेक ए शॉर्ट नोट्स ऑन इट। प्लीज कीप दैट शॉर्ट नोट्स रेडी फॉर योर एग्जाम। दिस इज द मंत्रा फॉर द एंटायर मेजरमेंट सब्जेक्ट, फॉर द एंटायर एरर एनालिसिस टॉपिक, माय डियर, for the entire error analysis topic, these boxes are the mantra. These boxes are most important. Anjabos, are you there? Pratik, are you there? Very good. Everybody, all of you following, my dear? Very clear? Fatafat. I'm expecting a notes from you, my dear. See, I'm not interested in answering the questions, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है, अनजबोस एंड अलग स्टूडेंट्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स आर देयर हियर, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कशन हो सकता है, कोई ना कोई फैकल्टी के बारे में आपको आंसर मिलेगा, बट बिहाइंड द क्वेश्चन, बैक साइड ऑफ द क्वेश्चन, बैकग्राउंड क्या है, उसका क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या है, उसके ऊपर आपको पूरा क्लैरिटी होना है। सबको क्लैरिटी आ गया? चलो चलो माय डियर, ओके, नाउ प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन फटाफट फटाफट। M1 इंस्ट्रूमेंट है, एक फॉरगेट अबाउट द इंस्ट्रूमेंट नेम, ओके, मीटर 1 है, फुल स्केल वैल्यू 20 एम्पियर्स है, 20 एम्पियर्स है, एक्यूरेसी फुल स्केल है 0.1%। फटाफट बताइए इसका लिमिटिंग एरर कितना होगा? ओके, इसका लिमिटिंग एरर कितना होगा? 0.1 ऑफ 20, 0.1 ऑफ 20%। फर्स्ट कितना होगा इसका? 0.1 by 100, 0.1% ऑफ 20, फटाफट बताइए। 0.1 by 100 into 20, that means 2 by 100, 2 by 100 बोल तो 0.02, okay ना? So this is 0.02%. I'm writing directly, my dear. I want to save the time. Okay. Next, full scale value 10 है, 10 से 0.2% है, 10 में 0.2% बोल तो 10 into 0.2 by 100, that means 2 by 1000, అంటే 20 by 1000, 20 by 1000 means 0.02% है, 0.02% है। Next, 5 is the full scale value, 5 के ऊपर 0.5% है, 5 into 0.5 by 100, 5 into 0.5 means कितना है? 5 into 0.5, 5 into 5, 25, 2.5, तो कितना आ रहा है? 0.025 ना? फटाफट, आई एम एक्सपेक्टिंग, फटाफट टेल मी 0.5 by 100, कैल से यूज करके बताइए जल्दी, प्लीज यूज अ कैलकुलेटर एंड टेल मी फास्ट।
5 into 0.5%, 5 by 1000, 25 by 1000 and 0.025. This is 0.025%. Next, this is 1 into 1%, that is 0.01%. Okay, so these are the guaranteed, sorry, what I mean to say, percentage na. So these are the limiting values. This is 0.025, this is 0.02, also 0.0, right? Chalo. Now by using this, he wants to measure which reading, a 1 ampere reading. Obviously, which meter is going to give minimum error? Which meter is going to give minimum error, my dear? Yes. Which meter is going to give minimum error? If you check for a measurement of 1 ampere, see first M1. For M1, for a measurement of 1 ampere, so that is 0.02 by 1 into 100, so it is going to give 2% error. Next, for a measurement of 1 ampere, M2, so I am calculating what? Percentage of limiting error, so 0.02 by 1 into 100, ये भी कितना आ रहा है? 2%. Next, for a measurement of 1 ampere, M3, so this is 0.025, so 0.025 divided by 1 for a measurement of 1 into 100, कितना आ रहा है? 25 by 1000, खत्म. 2.5% आ रहा है, 2.5% आ रहा है. Next, for a measurement of 1, the meter 4 is offering 0.01%, so 0.01 by 1 into 100, कितना आ रहा है? 1%. Definitely, which meter is offering the low error? Which meter is offering the least error? Meter 4 is offering the least error, so meter 4 is the right answer. मजा आ गया? जूही शर्मा मजा आ गया? प्रतीक जी मजा आ गया? मजा आ रहा है? मेजरमेंट का मजा आ रहा है? मेजरमेंट का जो कुछ फ्लेवर है, अगर आपको ये फ्लेवर अंडरस्टैंड हो गया, आपका पूरा जितने भी क्वेश्चन आए नहीं, whatever may be the question, whether the question may be asked on dynamometer, whether the question may be asked on CRO, whether the question may be asked on voltmeter, ammeter, whatever may be the question, इसका बिहाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटीड एक्यूरेसी एरर एंड लिमिटिंग एरर के ऊपर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी आ गया, आप कर सकते हैं. मजा आ गया? थैंक यू. क्लैरिटी आ गया? परफेक्ट. प्लीज मेंटेन रेगुलर अटेंशन इन द क्लास. एक सिंगल मिनट भी मैं ऐसा बात नहीं करता हूं. आपका टाइम वैल्यूएबल है, मेरा टाइम भी बहुत अच्छा वैल्यूएबल है. 8:30 PM से 10:30 PM तक जो 2 घंटे का सेशन मुझे अलॉट कर दिया है, एवरी मिनट इज अ वैल्यूएबल टाइम फॉर मी. जो शब्द मेरे माउथ से आता है वो आपका भलाई के लिए आएगा. आपका टाइम मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं. मैं डिफरेंट वर्सेटाइल प्रॉब्लम से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको देना चाहता हूं. ओके, चलो, विल रेस्पेक्ट द टाइम. नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Please answer this question. Very good question. Question asked by IIT Madras in 1997. IIT Madras, South Indian का #1 Indian university, #1 Indian IIT out of the all educational institute in the India, the #1 institution IIT Madras. Okay, my dear aspirants, whenever you are solving the questions, whenever you are preparing the questions, whenever you are preparing for the questions, please try to solve last 15 years gate questions. This question I have collected from not 2013, I have collected from 1997. जो years है 1997 before 2000, जो कुछ questions है, इतना अच्छा quality questions है, very beautiful conceptual questions है उसमें. So please prepare last 15 years gate questions for a particular concept. अगर आपने error analysis chapter पढ़ रहे, अगर आपने पावर मेजरमेंट चैप्टर पढ़े, 2 वाट मीटर मेथड का पावर मेजरमेंट पढ़ रहे आप, then you have to start the questions from 90s to 2021, so 2022, so that आपको confidence. So old question, old is gold. Please try to answer. In the circuit shown in the figure, for measuring resistance R,
if the ammeter indicates 1 ampere, कितना है 1 ampere, and the voltmeter indicates 100 volts. This is a voltmeter, my dear. This voltmeter indicates 100 volts. Then the value of R is dash ohms, and the error in measurement using the ratio of V by I is dash. Two questions hai. Question number 1, question number 2, numerically answer type hai. Try to answer this. Okay. Try to focus attention. How to solve? At least one question को answer करने की कोशिश कीजिए बेटा. In the circuit shown in the figure, for measuring the resistance R, if the ammeter indicates 1 ampere and the voltmeter indicates 100 volts, then the value of R is dash ohms and the error is dash. How to do this? First of all, if you see here, what is the value of R? What is the true value? True value कैसा measurement करना है? Measurement value कैसा measurement करना है? Please see here, if this is 100 volts, definitely the voltage across this also should be 100 volts. And this 1 ampere current is coming here, and 1 ampere current is going to split into two parts. So the voltage across the meter is 100 volts. Yes or not? So this current I is split into two parts, current passing through the voltmeter and current passing through the resistance IR. So if you want to take the voltage across the meter is 100 volts, the voltmeter value is 100 volts. So what is that? IV into RM, we can take it. Okay, IV into meter resistance, that is 100 volts. हमारे पास meter resistance है, that is 1 kilo ohm, 1000. So the current passing through the voltmeter is very clear. So 100 volts. So this got caught. So current is equal to 1 by 10, 0.1 ampere. Current passing through the voltmeter is 0.1 ampere, my dear. Current passing through the voltmeter is 0.1 ampere. This is 1 ampere. So कितना होगा current passing through the resistor? बताइए जल्दी. Simple electronic circuit का concept मैं use कर रहा हूँ बेटा. Current passing through the resistor कितना होगा? So current passing through the resistor कितना होगा? 9.9 amperes होगा, क्योंकि पूरा current point है हमने. So that 0.9 amperes, if you see the total current is matching to 1 ampere. मजा आ गया. So current passing through the resistor is 0.9 amperes. So now what is the voltage across the resistor, my dear? Let us continue. I am not using much bigger concept. I am not at all using bigger concept, my dear. I am using a basic electronic circuit theory concept. Electronic circuit theory, network theory concept, current, voltage. So what is the value of the voltage across this resistor? What is the value of the voltage across the resistor? That is VR. VR is equal to current passing through the resistor into resistance R. The voltage across the resistor also will be same. That will be 100 volts. And current passing through the resistor is 1 ampere. Sorry, current passing resistor is 0.9 amperes. So what is the resistance? कितना आ रहा है? 1000 by 9 कितना आ रहा है? Please tell me, 1000 by 9 कितना आ रहा है? Excellent. देखो, that is the right way of doing the answer. Somebody has given, so please give a round of applause. Please give a round of applause to the this girl or boy, I don't know, Krutibas Dwibedi. Krutibas Dwibedi कितना आंसर दिया है? 111.111. Excellent. 111.111 ohm. This is the way you have to do the problem. Please give a big round of applause for that person who has given exactly 111.111. Whenever you are doing calculations, my dear, अगर आपने error chapter पर, और not only error chapter पर, अगर आपने गेट के एग्जाम में न्यूमेरिकल कर रहे हो, आप याद रखना ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है. न्यूमेरिकल आंसर टाइप का आंसर फिक्स नहीं है, रेंज बाउंड होता है. इसके लिए आपने मिनिमम टू मिनिमम आफ्टर द डेसिमल आपने 3 डिजिट्स लेना है, 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स को लेना है. प्लीज मेक ए हैबिट ऑफ दिस. Please make a habit of this. Is it correct answer?
इज इट करेक्ट? 111.111 मेरे पास कैलसी नहीं है, फटाफट जल्दी बताइए, इज इट करेक्ट? 1000/9, 1000/9 111.111 करेक्ट है? नो, क्या 111.111 सही नहीं है? कितना आ रहा है? 1000/9 इन क्वेश्चन एरर आस्क। अरे मैन, टू थिंग्स आर आस्क्ड बेटा, two things are asked there. Shivam, two questions. The value of R here. Two questions. First question is there here. अरे यार इतना हरी भरी क्यों रे? दो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस में। हाँ शिवम जी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। आईआईटी मद्रास बेटा, इडली वड़ा सांभर है बेटा, ये आलू वड़ा आलू समोसा नहीं है। आईआईटी मद्रास है। मद्रास बोलो तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। हाँ तो कितना है? 111.111 एग्जैक्ट। दिस द ट्रू वैल्यू, दिस द ट्रू वैल्यू माय डियर। तो आपको ट्रू वैल्यू आ गया। ट्रू वैल्यू इज 111.111 ओम। आई होप दिस इज राइट। Now what is the measurement value? Measurement value you are going to get from the meters. That is a voltmeter reading and the ammeter reading. That's it. So voltmeter reading कितना है my dear? Voltmeter का reading कितना है? 100 volts. Ammeter का reading कितना है? 1 ampere. Okay. So this is 100 volts and ammeter का reading कितना है? Just 1 ampere. Correct है? So you will get 100 ohms. So this is the true value, this is the measurement value. Percentage error क्या होगा? Percentage error is measurement value minus true value by true value into 100 होगा। तो measurement value कितना है? measurement value 100 है। true value कितना है? true value 111.111 है by true value कितना है? 111.111 है into 100। प्लीज बताइए आंसर। मेरे पास कैलसी नहीं है, आप जल्दी से जल्दी एक्यूरेट आंसर बताइए, फास्ट। कितना आ रहा है? अगेन मिस्टेक किया, अगेन मिस्टेक किया बच्चों। अगर बस मिस्टेक कर रहे आप, हरी भरी क्यों है? मिस्टेक ना करो। डेफिनेटली आपको माइनस नहीं आएगा प्रतिभास, माइनस नहीं आएगा आपको। एरर में माइनस है नहीं। ओ माय गॉड, हम लोग 9.99 बोल रहे हैं, 99.99 बोल रहे हैं। कितना आ रहा है भाई? सही आंसर बताइए। मेजरमेंट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। द राइट आंसर हियर इज देयर इज अ नेगेटिव साइन इज इंपॉर्टेंट माय डियर। नेगेटिव साइन इज इंपॉर्टेंट माय डियर। जितने लोग नेगेटिव साइन नहीं दिया वो गलत कर रहे। माइनस, excellent, minus 9.9%. Minus not given means you're wrong. If you see the question, he is asking the error, so you should mention the sign. So देखो आपको क्या समझ में, आपको इधर माइनस। Understood my dear? See, you know the methodology, you have done in the right way, but you have given a wrong answer. Somebody given me here something 111 something, don't round off. And you have done error calculation, you have got 9.9%, but you have actually is minus 9.9. You have forgot that minus sign, you have given 9.9%. ऐसा silly mistakes मत करना. You understand? Please, anybody here, have you faced any previous students who are already getting the GATE exam? Already ऐसा experience हो गया आप उन लोगों को? Please share your experience, comments के रूप में share करो। सर ये क्वेश्चन सही किया सर, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया सर, बहुत अच्छा लिख दिया सर एग्जाम को, लेकिन लास्ट में छोटा सा मिस्टेक सर, इतना छोटा सा मिस्टेक, मैं माइनस साइन भूल गया सर।
2 marks फट sir. Rank went by 100 points sir. Anybody faced like this my dear? Anybody earlier, do you have this type of experience? Those who already didn't GATE examination, अगर जो फाइनल ईयर पास आउट स्टूडेंट्स है और ऑलरेडी गेट एग्जाम कंप्लीट एक बार और 2 बार एक्सपीरियंस है ऐसा, डेफिनेटली दोज पीपल प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. गेट इज नॉट अबाउट आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस माय डियर. गेट एग्जाम इज नॉट अबाउट सर 100 क्वेश्चंस है, 75 क्वेश्चंस है, मैं पूरा आंसर करना चाहता हूं. नहीं, गेट इज ऑल अबाउट giving the right answer for the question. हरी भरी नहीं, giving the right answer. ये silly mistakes, please be attentive. silly mistakes आपको नेगेटिव मार्क्स आने की चाहती है. ये सोच में होना है. IIT मद्रास, IITs are framing the questions my dear. You can share your experience. Yes, it is there. Gatopedia में दिया हूं, मेजरमेंट्स का शॉर्ट नोट्स हैं. yes. अरे भाई मैं क्लास पढ़ रहा हूं बेटा, आपको कमेंट्स को मैं कमेंट्स को कैसे आंसर कर सकता हूं? ओके, मैं क्लास को पढ़ा रहा हूं, आपके कमेंट्स को देख रहा हूं. ओके, यस, गेटोपीडिया में मेरा शॉर्ट नोट्स हैं, आप लिख सकते हो, ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड एक क्लास के बाद आपको मैं डीपीबी भी दे रहा हूं. 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, 10 वर्सेटाइल क्वेश्चंस, 10 डिफरेंट वेराइटी क्वेश्चंस ऑन एरर एनालिसिस. अगर वो प्रैक्टिस करे तो बस है, आपको एरर एनालिसिस का पूरा कवरेज हो जाए. थैंक यू, वेलकम. मजा आ रहा है? सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे हैं? सब्जेक्ट का फील आ रहा है, फ्लेवर आ रहा है? ये क्वेश्चन देखो बेटा, सुपर्ब क्वेश्चन है. दिस इज IIT बॉम्बे 1999 क्वेश्चन है. ट्राई टू आंसर. थैंक यू, वेलकम, परफेक्ट. जल्दी बताइए. IIT बॉम्बे का क्वेश्चन है 99 का. Please try to answer. And I have selected the questions. Some are from EEE, some are from instrumentation, so that आपको perfect idea आएगा. If you want to understand the real feel of measurements, you must solve instrumentation questions. This is related to instrumentation. This question is from instrumentation department. Try to answer this question. चलो क्वेश्चन देखो. ए करंट ऑफ, देयर इज अ करंट ऑफ 2 प्लस √2 साइन ऑफ 314t प्लस 30 डिग्रीज प्लस 2√2 cos of some 942t plus 45 degrees. So this current equation is given. Is measured by thermocouple type meter. Thermocouple type class 1 meter. Class 1 meter with 5 amperes full scale. 5 amperes full scale. First of all, what do you understand by this statement? Anybody can answer this? Anybody? What do you mean by this? Very good. RMS measure thermocouple. Very good. Thermocouple measures the RMS value. Shivam, perfect. Thermocouple measures the RMS value. Perfect. That's good. But what is this 5 amperes? The 5 amperes is the full scale value. So 0 amperes is this, 5 amperes is the full scale value. And class 1 meter, class 1 meter बोलो तो क्या है?
व्हाट डू यू मीन बाय क्लास 1 मीटर? ये क्लास 1 मीटर से आपको कुछ ना कुछ हिंट होना है। क्लास 1 मीटर का मतलब कुछ होना है, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, because question में clearly not only the current, okay, you can measure the RMS value. I know everybody perfect in network theory, everybody perfect in some circuit theory, so we know how to find out the RMS value, sir. Thermocouple instruments will measure the RMS value, sir. RMS value equal to root over Im by root 2 whole square, sir. I will do it, but what is this one class 1? Sir, maybe error less hoga. Very good, good guess. What is the difference between true RMS and thermocouple? What you are asking, my dear? Thermocouple का working or true RMS का working? Thermocouple works upon the principle of Seebeck effect. Okay. Class 1 meter means it is 1% error. Please make a note of this. Please make a note of this. This is one question from industry. If I say class 2 meter, if I say class 0.5 meter, if I say class 3 meter, that represents the percentage error. It represents 1% of guarantee accuracy. Please note down, Shivam ji, Rajendra Singh ji, Digvijay, 1% guaranteed accuracy error. So 1% of guaranteed accuracy error, 1% of guaranteed accuracy error, 1% guaranteed accuracy error at full scale value of 5 amperes. तो 5 amperes के ऊपर 1% error है, that means what I can write, 5 amperes plus 1%, one by 100 into 5, 0.05. This is the guaranteed accuracy rate. Now what is the current, RMS current here? Please tell me फटाफट. Yes, नहीं इधर. Yeah. I is equal to this one. What is the IRMS? So if I am taking again, so directly I will find out the IRMS here. What is the IRMS? Please find out फटाफट. IRMS कितना आ रहा है? IRMS is equal to square root of 2 square plus root 2 by root 2 whole square plus 2 root 2 by root 2 whole square. कितना आ रहा है? Please tell me. 2 square 4 plus 1, 5 plus 4, 9. So 3 amperes. It is coming as 3 amperes. It is coming as 3 amperes. Okay, 3 amperes, but error भी है. Error भी है, my dear. Error को कैसा निकालना? Error भी, of course, in this question, actually this is this 2 amperes नहीं है, this भी 3 amperes है actually. This is 3 amperes, printing mistake. This is 3 amperes. Now बताइए आपका error कैसा find out करना? He has given the error also. That means what? The percentage of guaranteed accuracy, limiting error कितना है? Percentage of guaranteed accuracy error is 1% of 5 amperes. So that you got it as how much, my dear? 0.05. 0.05 amperes. Now percentage of limiting error for measurement of कितना? For measurement of 3 amperes. You want to measure 3 amperes, my dear. So for a measurement of 3 amperes कितना होगा? That is 0.05 by 3 into 100, my dear. That is 5 by 3. 5 by 3 means you are going to get 1.67 like this. So you are going to get 1.66 percentage. So the right answer for this question is 3 amperes plus or minus 1.66 percentage. 3 amperes plus or minus 1.66 percent. Excellent. Clear हो गया सब लोगों को? मजा आ गया? Everybody understood?
Do you understand how the questions are asked? Have you seen the different variety? How the guaranteed accuracy error, limiting error, they're asking on the different instruments. See, in this question, have you observed? He tested the RMS concept. He tested about thermocouple instrument. So, आपको पता होना है PMMC measures what, moving iron measures what, thermocouple measures what, true RMS measures what, dynamometer measures what, wattmeter measures what. आपको पता होना है. PMMC measures average value, moving iron measures RMS value. Okay, all thermal instruments RMS value. You understand, my dear? And dynamometer average power. Please make a note of all these points. Please make a note of all these points, my dear. Question answer करना is not only important. क्वेश्चन के बैकग्राउंड में कितना कॉन्सेप्ट टच हो रहा है बेटा, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट टच किया है. ये कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 1. एक क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट टच किया है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट ही टचड द परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर कॉन्सेप्ट. सेकंड कॉन्सेप्ट ही टचड अबाउट द thermocouple टाइप इंस्ट्रूमेंट. थर्ड कॉन्सेप्ट ही टचड द नेटवर्क्स RMS कॉन्सेप्ट. यस सर नॉट? So 3 different concepts in a single question. IIT Bombay 1999. Old is gold. मजा आ गया? Yeah. Please try to solve. Try to solve conceptual different varieties of questions. Please try to solve this question. Last question for this day. IIT कानपुर 2015 का क्वेश्चन है. IIT कानपुर 2015 का क्वेश्चन है, फटाफट. This is 1 microfarad. वन माइक्रोफैरड. प्रिंटिंग मिस्टेक है. 1 माइक्रोफैरड. आंसर क्या है? आंसर है, अरे आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन आंसर किधर गए? प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर 1.7. ऑप्शन सी है ना, 1.67 नहीं है. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. क्योंकि आपको कितना आ रहा है? 1.66 आ रहा है ना, सो राउंड ऑफ करो तो 1.7. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट. डन. चलो, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन माय डियर. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? फटाफट. Please make a correction here, my dear. This is not 1 microfarad. Printing mistake. This is a 9 microfarad. This is 9 microfarads. It is 1 microfarad. 1 microfarad, 9 microfarad. C1 is 1 microfarad. This bus voltage 100 kilovolts. 100 kilovolts, my dear. This question 100 kilovolts. 100 kilovolts given in the question. Supply voltage. Okay, that's a V bus. That is some bus, some supply voltage. 100 kilovolts. P1 is 1 microfarad plus or minus 10%. P2 is 9 microfarads plus or minus 10%. क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को? फटाफट बताइए बेटा, क्वेश्चन क्लियर है नहीं?
प्लीज टेल, सही है क्या? 11.75, 12.25। ईशान तिवारी चेक करना है, करके बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्लियर है? जितने लोग लाइव में है एक बार मुझे थम्स अप दिखाइए बेटा, एक बार मुझे सिंबल दिखाइए। जितने लोग लाइव में अभी 10:30 हो रहा है, ऑलमोस्ट 10:30 PM, रात को 10:30 PM हो रहा है। जितने लोग अलाइव है, जितने लोग स्लीप मोड में गया, एक बार मुझे देखना है। प्लीज शो योर रेस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ सम सिंबल्स। अभी राइट नाउ जितने लोग लाइव में है मुझे एक बार सिंबल दिखाइए बेटा। या see here, a capacitive voltage divider is used to measure the bus voltage V bus in a high voltage 50 Hz AC system as shown in the figure. The measurement capacitors C1 and C2 have tolerances of plus or minus 10% on their nominal capacitance values. If the bus voltage is 100 kilovolts RMS, the maximum RMS output voltage we have. Please remember this point, maximum RMS. Maximum RMS. So first of all, C1 is, please listen here, C1 is 1 microfarad plus or minus 10% means, so 10% of 1 microfarad. Okay. So you are getting 0.1 microfarad. That means either it is 0.9 microfarad, yes or not? That means what? 1 microfarad plus or minus 0.1 microfarad. That means what? Either it is 0.9 microfarad or 1.1 microfarad. Please make a note of this point, C1. Okay. Similarly, C2 also please find out. 9 microfarads, 10% of 9. That means 0.9. 0.9 बोलो तो 8.1. C2 कितना होगा? 8.1 microfarads or 9.9 microfarads. ये सही है फर्स्ट ऑफ ऑल? ये सही है और नॉट? प्लीज फाइंड आउट। 1%, 10% ऑफ 1 microfarad कितना है? 0.1. Similarly, 10% of 9 microfarads बोलो तो 0.9. So 9 plus or minus 0.9, either 9.9, 8. ये सही है ना? C1 C2 का वैल्यूज करेक्ट है? यस, परफेक्ट, ये सही है। तो मुझे C1 C2 का वैल्यूज आ गया। प्लीज लिसन, सर्क्यूट ऐसा है, सप्लाई वोल्टेज जो कुछ पे है देखो, वॉट एवर। तो दिस इज C1 and this is my C2. Okay, question here is the voltage across the C2. नेटवर्क थ्योरी का कॉन्सेप्ट आ चुका है इधर। द वोल्टेज अक्रॉस द C2 पूछ रहा है। वोल्टेज अक्रॉस का C2 क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस द C2 इज इक्वल टू, नेटवर्क थ्योरी का कॉन्सेप्ट, 2 capacitors are in series my dear. 2 capacitors are series. These are 100 kilovolts supply voltage. Now I want to find out the voltage across the second capacitor according to voltage division rule of the capacitors. अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है, ऑपोजिट कैपेसिटेंस C1 by C1 plus C2 into V सप्लाई होगा। समझ गए आपको? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है द मैक्सिमम RMS आउटपुट वोल्टेज। So this V out should be maxima. So this V out should be maxima my dear. So this V out should be maxima when it is possible. क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपको? क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है V out should be maxima. अगर V out maximum एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, when it can be maximum, please tell me. Please tell me V maximum कब हो सकता है? दोनों मिनिमम सी। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लीज ध्यान से देखो, V out मैक्सिमम होना बोलो तो ये डिनोमिनेटर टोटल वैल्यू कम होना है एंड न्यूमरेटर ज्यादा होना है। अंटे C1 वी हैव टू टेक मैक्स एंड नीचे डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 वी हैव टू टेक मिन। सर नॉट माय डियर, देन ओनली आपको मैक्सिमम वैल्यू आएगा। सो व्हाट इज द मैक्सिमम C1 माय डियर? सो द C1 मैक्सिमम कितना है?
C1 मैक्सिमम कितना है 0.9 और 1.1, you have to take 1.1 my dear, so this is 1.1 microfarad you have to take, and here at the bottom minimum C1 minimum कितना है, C1 minimum 0.9 microfarads, this is 0.9 microfarads, and C2 minimum कितना है, C2 minimum कितना है 8.1 microfarads, 8.1 microfarads my dear, you understand, मजा आ गया. This is the logic behind this question. एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, आपका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आना है, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज के लिए पूरा रेशियो मैक्सिमम होना है. Vs we cannot change, only the numerator and denominator we have to choose. न्यूमरेटर में C1 है, मैक्सिमम के लिए C1 मैक्सिमम वैल्यू लेना है. डिनोमिनेटर टोटल टुगेदर मिनिमम होना है, डिनोमिनेटर कम है तो पूरा रेशियो ज्यादा आएगा, तो इसके लिए C1 मिनिमम C2 मिनिमम मैं ले रहा हूं. सो अभी V आउट चेक करो कितना आएगा. V आउट C1 maximum if you take 1.1 microfarad divided by C1 plus C2, this is 0.9 plus 8.1 microfarad into supply voltage कितना है 100 kilovolts. Please solve this. Microfarad gets cancel फटाफट. तो कितना आ रहा है 0.9 plus 8.1 9 है ना, yes 9, 1.1 into 100 by 9 कितना आ रहा है, how much you are getting my dear, 12.23, very good, 12.2, very good, 12.2 kilovolts is the right answer. Somebody was asking me, sir my question is right or not, somebody was asking me मेरा आंसर सही है नहीं, this is the right answer. पता आ गया आपको आंसर, मजा आ गया, after enjoying 12.2 kilovolts. ऑप्शंस है उसमें, ऑप्शंस नहीं है, so the right answer is 12.2. $12.2 my dear, 12.2 is the right answer. क्लियर है सब लोगों को? Have you enjoyed the session? सर मैंने एरर डीडी कर दिया. ओके जी सर. सर बट हाउ वी कैन टेक टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ C1 इन सिंगल इक्वेशन. सतीश कुमार क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ही इज आस्किंग द maximum RMS output voltage considering the capacitance tolerance. Considering the capacitance tolerance my dear, if you consider the tolerance, by considering the tolerance, this is a minimum capacitance, this is a maximum capacitance, this is the minimum capacitance, this is a maximum capacitance. So I want to get maximum output voltage. maximum output voltage आने के लिए मैं C1 C2 को ऐसा चूज करता हूं, C1 C2 को ऐसा चूज करता हूं. Satish ji clear? Satish ji, the same thing you can take for two resistors are in parallel. R1 R2 both are in parallel. If suppose if they both are in parallel, one is 100 ohms, other one is 100 ohms, one is having 1% tolerance, other one is 2% tolerance, and I want the percentage error in the resultant equivalent resistance, at that time also same methodology you have to do. हाँ सतीश जी, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं. Two resistors are in parallel. You take any number, 100 ohms or 200 ohms, whatever may be the number, you take it, and you please consider the tolerance as 2% or 1%. Now I want the percentage error in the equivalent resistance. Same methodology we have to follow. Perfect answer आपको मिलेगा. चलो ये स्पैम नहीं करना बेटा. अदर यू शुड नॉट डिस्कस क्रॉस कम्युनिकेशन हियर. गेट वाला चैनल आपको ब्लॉक करते हैं, ऐसा करे तो दैट इज गोइंग टू ब्लॉक बाय द गेट पर्टिकुलर गेट वाला चैनल, एंड फिजिक्स वाला चैनल इज ऑब्जर्विंग ऑल दिस स्पैम्स हु आर थ्रोइंग द मैसेजेस. प्लीज कम विद अ सीरियस अटेंशन, क्योंकि मैं ऐसा जनरल बातचीत करने के लिए मैं इधर नहीं आया हूँ.
2 घंटे का समय मैक्सिमम एफर्ट्स से मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. इट्स अ सिंसियर suggestion or request or warning, whatever you consider. I don't like these spam messages, cross messages, talking with some other thing, some other person. I will be blocking those IDs. I will be informing to the management team. मेरा क्लास जो कुछ यूट्यूब सेशन, लाइव सेशन है, फ्री सेशन है, उसके पीछे बहुत सारा एफर्ट्स है फैकल्टी का, मैनेजमेंट का, टीम का, टेक्निकल टीम का, एंड यूर को क्लासमेट्स का. Some students are very serious, they are waiting for the live classes, they are attentive in the class. उन लोगों को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है. मैं आपको सिंसियर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप इंटरेस्ट नहीं है क्लास से, बाहर जाओ. डोंट थ्रो द क्रॉस मैसेजेस एंड डोंट डिस्टर्ब द क्लास एंड अदर मेंबर. Okay, this is my first class. I am giving a suggestion as a caution for the next class onwards. If I play just a message, automatically the ID is going to be blocked. Serious attempters, serious fellows, serious thinkers only will come to the class and they will solve all the questions. And my dear students, from the next class onwards, we are going to get some more bit faster. क्योंकि आज तो पहला क्लास है, थोड़ा सा मैंने थियोरेटिकली बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया हूँ. एंड जो जितने लोग अभी न्यू कमर्स है, मैं एक बार बोल रहा हूँ उसको. मेरा नाम सतीश कुमार दुर्शेट्टी है, फैकल्टी ऑफ मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंटेशन, हैविंग ए लास्ट 16 years of teaching experience in the gate field for subjects of measurements, instrumentation, microprocessors, all those things. Okay, so my time is so valuable and your time is also valuable. Don't waste the time. We'll meet tomorrow again at the same time, 8:30 p.m. with the second chapter, measuring instruments. In a single stretch, we are going to cover some questions on PMMC, some questions on moving iron, some questions on dynamometer. एंड क्लास को आने के पहले ही आप अभी एक क्लास के अंत में आपको डीपीपी आने वाला है. डीपीपी पब्लिश होगा पीडब्ल्यू ऐप पर. पीडब्ल्यू ऐप पर जाके मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास नोट्स का, शॉर्ट नोट्स, एंड आल्सो डीपीपी भी डाउनलोड कर सकते हैं. वो डीपीपी में पूरा मैंने 9 to 10 क्वेश्चंस दिया है एरर एनालिसिस पर, पूरा की भी दिया हूं. प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट. अगर आप सिंसियर फॉलोअर्स हैं, अगर गेट को फ्री एजुकेशन से आप रैंक को लेना चाहते हो, रैंक को अटेम्प्ट करना चाहते हो और रैंक को बेस्ट रैंक को देना चाहते हो, आपको सीरियस एफर्ट्स होना है. यू शुड कीप योर सीरियस एफर्ट्स. प्लीज डाउनलोड द डीपीपी एंड ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ओके माय डियर, चलो. So please, all of you, please follow my instructions. Next class onwards, time is so precious. 8:30 to 10:30, minimum 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है. आज हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किया, मैक्सिमम 6 or 7 क्वेश्चंस we have solved, but all are conceptual questions. From next class onwards, our target is 10 plus questions. That is possible if and only if you are more serious and more faster than me. Okay? चलो बेटा, बिफोर लिविंग द क्लास एक बार ऑल ऑफ यू गुड नाइट. एक बार आपका एक्सप्रेशन दिखाइए, एक बार आपका थम्स अप दिखाइए. We are going to log off this session. I hope I also enjoyed the session. I hope you people also enjoyed this session very much. Okay? कैसा लगा क्लास? आपका क्लास के बारे में मुझे कमेंट्स के रूप में दे सकते हो. एंड आपका प्यार, ये पर्टिकुलर लिंक को आप फिर पढ़ना है, फिर शेयर करना है, एंड आपका दोस्तों से भी ये माउथ पब्लिसिटी करवा दे. ओके, गुड नाइट एवरीवन. ओके, so love you all. Please come tomorrow with a good preparation, DPP practice, and with a serious notepad and a calculator, and with a serious mind you come. Tomorrow we'll do more beautiful questions, more conceptual questions. Love you all. Take care. Thank you.